topic. Here we have to see if bridges are constructed on the roadside or on the river. So, how many types of bridge are constructed? There are different types of bridge are constructed on the river or a roadside according to their space and area and city. So there are different types of bridge. Let's to study about some of them. First, traditional bamboo bridge. Okay, bamboo means made from wooden stick, a long and hollow wooden stick, that is called bamboo bridge. So underline the spelling of traditional. Okay, so these bridges are usually found in villages or at a place which receive a plenty of rainfall. Okay, traditional bamboo bridge. So it's made from wooden bamboo. It's look like a real naturality. Okay, traditional means because जो वांस है, जो जंगल एरिया में वांस ग्रो होता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल बम्बू ब्रिज. और उसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं वो लोग वांस की अलग अलग पाइप, बिकॉज इट्स टू मच स्ट्रॉन्ग. ओके, बम्बू इज टू मच स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स एंड when there is a receive or plenty means too much rainfall. Okay, these are easy to construct but are not very safe because stick bamboo is a very strong material, but when they are constructed they have to make a big peak and they have to go deeply that end part of the bamboo, but due to sometimes that more water is deep into the void, suck into the soil. Okay, तो उसी टाइम वो पानी की वजह से नीचे से वो स्ट्रक्चर हिल जाता है और समटाइम्स इट फॉल डाउन, सो इट इज नॉट सेफ. Loads of this are used to be a pillars for support. Bamboo or a flat wooden piece are tied to this pillar using a rope. उसका जो एंड पार्ट है वो डोरी से, ओके, बिकॉज इट्स टू टॉल, तो जहां पे उसकी हाइट कंप्लीट हो जाती है वहां पे वो सेकंड बम्बू की जो स्टिक है वो थ्रेड से टाई करते हैं. बट समटाइम्स मे बी इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग टाइट, it will be fall down, so we have to take care while it's be a constructed. Traditional means it is a olden process, okay, to be construct, because रूरल एरिया में छोटी छोटी नदी वहां से पास होती रहती है और वो लोग क्या करते हैं कि बम्बू की ऐसी सीट बना देते हैं और उसके ऊपर चल के वो रिवर को क्रॉस कर देते हैं. क्लियर इट ऑल ऑफ यू? चलो, सेकंड बीम ब्रिज. Okay, BEAM, beam bridge. It is the most commonly found and the oldest type of bridge. जो beam bridge है, चाहे वो वुडन से बना हुआ है या सीमेंट से बना हुआ बीम है. Beam means when we are construct the buildings or a bridge. Okay, so below the soil, some of the length we have to insert to dig into the soil and tied and fitted with the soil, and after that we have to fill the pit with the soil, cement, reti or concrete. So earlier time when there no modern structure is constructed by the engineer. So in earlier time there were no any modern construction for the bridge. Okay, so how people can passes the road and rivers and dams. So in a rural area they can construct the structure using a bamboo or a beam bridge. वो अपने आप ही beam bridge बना देते थे लकड़ी रख के या आयरन का.
support बना के. So it is the most commonly, it's very commonly normal, okay, found in an oldest type of bridge. So earlier time, अभी तो कितनी modern technologies are available, okay, directly the work is done by the machinery, less manpower is used to construct the bridge and more work is completed before time. But nowadays, okay, it is available. But earlier time, when there no any modern equipment, no any modern technology, so oldest type of bridge in the type of bridge beam is a horizontal structure. Okay, what is a beam bridge? A beam or a horizontal structure. Underline the spelling of horizontal. Okay, horizontal structure rests or support on a either end. जहां से रिवर स्टार्ट होती है और जहां पे रिवर कंप्लीट होती है वहां पे दो लॉन्ग स्ट्रेट बीम आर कंस्ट्रक्टेड एंड इन अ सेंटर टू बी अ सपोर्ट मोर और वन a beam are constructed by using the wood or by using a cement, iron, sand, water, okay, small pebbles they are used, that is called pebbles. Okay, so a long straight structure rests a support on either end, both the end of starting of river and end of the river they construct. In older days it made made of wood, but now a beam bridge are made up of steel and concrete. Okay, concrete जो black color के छोटे छोटे stone आते हैं जब हम हमारा घर बनाते हैं. Okay, steel and concrete. Concrete means small pebbles. Cutting pebbles made from a big stone. Okay, that is called concrete to make a strong and फिटेबल स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर को हमको फिट करना है तो उसके लिए उसका जो बाइंडिंग है कंक्रीट की वजह से वो प्रॉपर रहेगा. ओके, चलो. एंड सो सीमेंट एंड कंक्रीट विथ many pillars for support. many pillars starting सेंटर में उसको सपोर्ट के लिए और जहां पे रिवर एंड होती है तो अकॉर्डिंग टू द एरिया कितने बीम बनाते हैं वो दैट दे हैव टू कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ. अगर स्मॉल रिवर इज देयर, ओके, या स्मॉल रोड इज देयर, सो ओनली 5 to 6 beams are constructed. But like you have to see when we are passes the river of Narmada, when we are going to Baroda. ओके, आप अहमदाबाद में जाओ तो साबरमती नदी के ऊपर जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया, आप सूरत जाते हो तो तापी नदी के ऊपर जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है, ओके, वो आप ऑब्जर्व करते ही हो बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू पासेस फ्रॉम द ब्रिज बाय योर ऑन कार या इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. सो वी हैव टू सी अ बिलो द ब्रिज व्हेन वी आर पासिंग बाय आवर व्हीकल्स. So we have to see the area, okay, length of the river, width of the river, and according to that way we have to construct these pillars and this support to given to the beam bridge.